Hello everyone, this is Devang Katikar from DK Talks. I hope that you all are doing well. So, in the previous session, we discussed that how the bravery and skill set of Prithviraj Chauhan had a great impact on the history of this country. After the death of Muhammad Ghori, the entire Ghori empire was taken over by the Mamluks. And after the Mamluks, it was taken over by the Khiljis. The Khilji dynasty extended for 50 years till 1345. Jalaluddin Khilji was the first emperor of the Khilji dynasty who was succeeded by Alauddin, his son-in-law. Alauddin was very ambitious and wanted to extend the boundaries of the Khilji empire even further. It was due to Alauddin Khilji that the entire Khilji empire extended towards the south. The expeditions of Alauddin Khilji are many, but few of them should be really discussed at this very moment. The two of them include, first is his expedition to conquer Devgiri, the capital of Yadavas then. Devgiri is a fort located in Aurangabad, right in Maharashtra. It is also called as Daulatabad after a name was given to it by Alauddin Khilji himself. उसे दौलताबाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस किले को लूट के बहुत सारी दौलत मिली थी एंड विच अलाउद्दीन खिलजी टुक ओवर टू कारा, तो उसको दौलताबाद बोलते हैं. इन द स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म पद्मावत यू वुड हैव सीन दैट सीन कि जो कारा में लूट के सब दौलत लेके गए थे, दैट वाज फ्रॉम देवगिरी. सो आई माई सेल्फ हैव विजिटेड द फोर्ट ऑफ देवगिरी और वहां पे अंदर एक भूल भुलैया है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्कर द फोर्ट. I want to give a reference of late Baba Saheb Purandare here. So Baba Saheb Purandare in his book he has explained that कि अलाउद्दीन खिलजीला देवगिरीमध्ये घुसणं किती कठीण होतं. जितकं कठीण रावणाला सीतेच्या मनात शिरणं कठीण होतं, तितकंच कठीण अलाउद्दीन खिलजीला त्या देवगिरीमध्ये शिरणं कठीण होतं. इट वॉज सो डिफिकल्ट टू कॉन्कर द फोर्ट, बट अलाउद्दीन डिड. Alauddin laid a siege to the fort, and after many months, जब गेहूं निकाले गए, जो स्टैक्स थे गेहूं के वो खोले गए, उसमें से नमक निकला. It means that the people inside the fort were betraying the people who were of their own. The Yadavas were betrayed, and because of that, Alauddin Khilji. Because of this treachery, Alauddin Khilji really conquered a fort with ease. After conquering Devgiri, when he was told that Queen Padmavati was so beautiful that it's very precious for you to see her, so Alauddin Khilji started his expedition towards Chittor. At this very moment, I don't feel there is a lot of need to explain that चित्तौर कैसे था, क्या था, कितनी दीवारें थी, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू व्हेन इट कम्स टू अकबर्स कॉन्क्वेस्ट टू चित्तौर. बट राइट नाउ आई एम नॉट इन अ पोजिशन और आई एम नॉट इन अ स्टेट दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इट प्रिटी वेल बिकॉज इट्स नॉट रिलेवेंट हियर. सो अलाउद्दीन खिलजी लेड सीज टू चित्तौर. आफ्टर दैट रावल रतन सिंह को वो लेके दिल्ली चले गए थे. उसके बाद वापस दिल्ली से उनको लाया गया. पद्मावती ने घोरा और बादल की मदद से उनको वापस चित्तौर लाया. उसके बाद दे हैड अ वॉर, उसमें ट्रेचरी हो गई. अलाउद्दीन खिलजी ऑलवेज प्लेड विद अ ट्रेचरी. In fact, many of the invaders that came right from the northwest played with this idea of treachery because they just wanted to win over. So, because of that, entire Chittor came under the Khilji rule after that. But आखिर में जो जौहर हो गया, after that Johar, Alauddin Khilji wasn't able to see Padmavati, which was his final aim. चित्तौर में कुल 3 जोहर हुए हैं. एक बहादुर शाह के जब अटैक हुआ था तब, एक जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, और एक जब अकबर ने अटैक किया था. सो दिस अटैक ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, दिस वाज द बिगेस्ट जोहर इन द हिस्ट्री ऑफ चित्तौर. जब रानी पद्मावती के साथ बहुत सारी दासियों ने आग की चादर ओढ़ ली थी. So after that, Khiljis really ruled almost 3/4 of India at that moment. But the Khiljis, after the death of Alauddin Khilji, were succeeded by the Tughlaqs.
एंड मोहम्मद तुगलक की आपको एक स्टोरी पता है. मोहम्मद तुगलक वाज द सेकंड किंग हु वाज देयर इन द तुगलक एम्पायर. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, देवगिरी टू दिल्ली. बहुत सारा शिफ्टिंग हुआ, उसके वजह से डिटोरिएशन हुआ तुगलक एम्पायर का. एंड फाइनली आफ्टर तुगलक्स it was succeeded by the Sayyids, and after Sayyids it was the Lodhis who sat on the throne. So Lodhis were sitting on the throne of Delhi with Lodhi Sultanate, and Ibrahim Lodhi being the third generation emperor of the same. But तब फरगना, समरकंद और काबुल में कुछ और ही चल रहा था. It was the rise of an empire which was gonna change the history of this country. It was a rise of Babur. About this I will discuss in the further videos. Right now I will stop here. Please share, like and subscribe to my channel and keep watching.